Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So today what we are doing? We are going to start our next topic. But before going to start the next topic, firstly I will revise the previous part. So in our previous part what we have studied? We have studied about the three natural indicators. Which three natural indicators we have studied? First is that litmus paper. Then second we have studied about the turmeric indicator. And third natural indicator that we have seen, China rose indicator. Okay. So these are the three natural indicators: litmus paper, turmeric paper, and the China rose indicator. These three natural indicators we have studied. So today what we are doing, we will do the table 5.5, means in that we will do the test of all these three natural indicators on some acid substance and on basic substance. Okay. So what is given in table 5.5? For this activity 5.4 we have to do. What is the 5.4 activity? There are different kinds of samples, means some acid substance and some basic substance we have to take, just like dilute hydrochloric acid, sulfuric acid, dilute, all this acids should be dilute. Okay, dilute hydrochloric acid, dilute sulfuric acid, dilute nitric acid, then dilute acetic acid. These all four acids we should take, and the basic substance, that means sodium hydroxide, ammonium hydroxide and lime water, that is calcium hydroxide. So on this different acid and base substance we have to perform the थ्री डिफरेंट टेस्ट. कौन से पेपर टेस्ट करना है हमको? लाइक वन इज लिटमस पेपर, सेकेंड इज टर्मरिक पेपर एंड थर्ड वन इज चाइना रोज सॉल्यूशन. मीन्स ऑन दिस डिफरेंट सब्सटेंस वी हैव टू परफॉर्म ऑल दिस थ्री इंडिकेटर टेस्ट. अंडरस्टूड? हम क्या करने वाले हैं? हम तीनों इंडिकेटर्स को इन ऑल एसिड एंड बेसिस सब्सटेंस पे टेस्ट परफॉर्म करने वाले. ओके, एंड ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस वी विल राइट इन टेबल 5.5. actually in the table 5.5 there are 3 columns are given, but you have to add more 4 columns. Understood? See what I am telling you, listen it properly. In the table 5.5 you have to add 4 more columns and draw this proper table in your copy. Okay, I will tell you how you have to do this. The first is dilute hydrochloric acid. See, there are 3 columns are given. First, effect on litmus paper, second effect on turmeric paper and effect of चाइना रोज सॉल्यूशन. सो हमें क्या करना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन तीनों इंडिकेटर्स पे क्या इफेक्ट है वो लिखना है. मीन्स वी हैव टू राइट द इफेक्ट ऑन ऑल दिस 3 इंडिकेटर्स. बट टेल मी स्टूडेंट्स, फर्स्टली litmus paper gives which color in acid and which color in base? Litmus paper always give red color in acid and blue color in base. Okay, remember this thing. Litmus paper gives red color in acid and blue color in base. Just similarly, turmeric paper also gives red color in base, but in acid it does not show any change. टर्मरिक एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं शो करता, बट बेस में वो कौन सा कलर शो करता है? रेड कलर. ओके, एंड इन चाइना रोज इंडिकेटर फॉर एसिड सब्सटेंस इट गिव्स डार्क पिंक, दैट इज मेजेंटा, एंड फॉर base substance it shows green color. Okay, remember this thing firstly because it will help you for writing the observations of table 5.5. okay, so let us start table 5.5. First, dilute hydrochloric acid. The effect of litmus paper, the blue litmus paper will turn to red. Okay, and effect on turmeric paper, no, because इट इज़ एसिड. सो एसिड में टर्मरिक कोई भी कलर
शो नहीं करता है, बट लिटमस पेपर ब्लू टू रेड कलर शो करेगा. ओके, एंड व्हाट विल शो इन चाइना रोज? चाइना रोज में क्या होता है? एसिड सब्सटेंस डार्क पिंक मीन्स मैजेंटा कलर. ओके, सेकेंड वन इज सल्फ्यूरिक एसिड. अगेन इट इज एसिड, तो सेम चेंजेस आएंगे. मीन्स लिटमस पेपर में क्या होगा? ब्लू टू रेड कलर. टर्मरिक पेपर नो चेंज. ओके, एंड चाइना रोज सोल्यूशन again dark pink means magenta color. थर्ड वन राइट फॉर द नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड के लिए क्या आएगा? ब्लू टू रेड. लिटमस पेपर विल चेंज ब्लू टू रेड. टर्मरिक पेपर पे नो चेंज. एंड चाइना रोज सोल्यूशन अगेन डार्क पिंक मीन्स मैजेंटा. ओके, नाउ फोर्थ वन इज एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड के लिए क्या आएगा? सेम ऑब्जर्वेशन. लिटमस पेपर ब्लू टू red and turmeric paper no change, and china rose solution again dark pink means magenta. Okay, means first to four observations will be same for all. Now fifth, sixth and seventh, write down the fifth, sixth, seventh name for acid, that is sodium hydroxide, ammonium hydroxide and lime water. Okay, so what will be the observation for sodium hydroxide? Because it is a base substance. base पे क्या रहेगा litmus का? Your red litmus paper will change to blue. Okay, red litmus paper blue change हो जाएगा. And turmeric paper में it turns red. Your turmeric paper will turns red color. Okay, and in China rose solution, इन चाइना रोज बेस में कौन सा कलर शो करता है? ग्रीन. सो इट विल टर्न्स टू ग्रीन कलर. अंडरस्टूड? सो इट इज़ फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल्सो फॉर ऑल द बेसिस सब्सटेंस, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड. सिक्स आपको लिखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सेवेंथ आपको लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. Okay, so all these are the examples of base and it will show the same observation like sodium hydroxide. क्या दिखेगा? red litmus paper will change into blue and turmeric paper will change into red. Okay, and china rose solution it will turns to green color. Understood? Because it is a base substance. I know very well students, you somehow you are little bit confused, but what you have to do, firstly you have to remember all three indicators taste on acid and base. Once you will remember all this taste of acid and base, then this table 5.5 will be very easy for you. आपको सिर्फ पहले क्या याद करना है? आपको तीनों इंडिकेटर्स के एसिड पे और बेस पे कौन से कलर चेंज होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर ओनली. ओके, एक बार आप ये याद कर लोगे, देन यू विल फील दैट टेबल 5.5 इज़ वेरी इजी बिकॉज इट इज़ गिवन ओनली द सेम थिंग. ऑल थ्री इंडिकेटर्स टेस्ट आर गिवन इन दिस टेबल 5.5. Understood? So today's work is what? You make one table for all these three indicators, natural indicators, that is litmus paper, turmeric paper and china rose solution, and write down the color change of acid substance and basic substance on these three indicators. Okay, make this table for all these three indicators and complete this table properly and send it to me on my personal number. Understood? Thank you. More thing that all students have to do this practice at home, and in our next part I will help you to solve this table 5.5 properly. Firstly I'll give you all the tables properly, then automatically you will get the help to solve this table 5.5. Okay, thank you.